Hello everyone, how is life? I will quickly add Samar. क्या हाल चाल है आप लोगों के? छठ की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। बाय द वे, जब तक समर आते हैं तब तक मैं आप लोगों को बता दूं, ही इज़ अ फोर्थ जनरेशन ऑफिसर एंड बाकी द मोमेंट ही इज़ हियर we shall talk about it. I have sent him a request. Samar, if you can, if you're in the live, I've already sent you a request. Just join in. Samar Toor is unable to join. Okay, let me send the request again. तो आज इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच पे क्या विचार हैं आप लोगों के? डू यू थिंक वी कुड हैव डन बेटर? 17th ओवर अश्विन को ना देके आई थिंक वी कुड हैव गिवन दैट टू इधर अर्शदीप और सामी. Am I right? हाँ, समर इज हियर. सर आंखें नशीली लग रही हैं, एक दो पेग लगा लिया क्या? अरे ऐसी किस्मत रोज कहाँ होती है दोस्त. पाकिस्तान आउट फ्रॉम वर्ल्ड कप. यस. समर, व्हाई इज इट हैपनिंग दैट you're not able to join? That's strange. View request. I'm accepting your request. This is that दिल थाम के बैठी हूँ मैं. बैठिए मेहरबान कदरदान. देखिए मैं इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई टाइप्स. मोमेंट इज दैट. सर जय हिंद सर. जय हिंद जय हिंद. हाउ आर यू समर? आई एम गुड सर. मैं एक्चुअली आई वाज ट्राइंग कि लैपटॉप पे अगर ये हो जाता तो लैपटॉप पे वो ऑप्शन नहीं आ रही थी लाइव स्ट्रीम की, तो देन अब मैंने अपने मोबाइल से किया है. ओके ओके. आई थिंक इंस्टा के लिए दिस इज अ बेटर थिंग. फोन. हाँ मतलब सर लाइक आई थॉट कि चलो लैपटॉप पे थोड़ा प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगा तो इट विल बी गुड. बड़ा बड़ा दिखेगा टाइप्स. हाँ सर. Okay, cool. So, I think, ladies and gentlemen, I don't think Samar needs any introduction. His stories from his UN and he's known as a combat person. He's perceived already as a combat person. But briefly, I would want to tell you, Samar has gone to a very good school in Nainital, Sherwood, and he's done his graduation from Baroda, if I'm not wrong. Samar is fourth generation officer, and he hails from Punjab. And there is so much more about him that I think a lot of new people who are on my page would want to know today. I have one request to everyone before we start this conversation. Let's not get carried away with what is happening around, and maintain sanity and be positive around this session, because there is a lot for all you aspirants, people who are joining us, to learn. And it's all about how we deal with life, how we should deal with life. And we are only trying to tell you what we feel is right. And there is nothing right, there is nothing wrong. Your right is your right, your wrong is your wrong. So, Samar, not without wasting any time,
First of all, thank you so much for accepting this request on a such short, intimation. Um, we would just want to know about your journey, wherever you want to start from briefly, and then we will definitely come to your most highlighted story of Sudan that's everybody is waiting for. But over to you. Sir, well, my journey started in 1986 when I landed on this planet, and I was born in a place called Moga, Punjab. I belong to a Sikh family, and uh, I studied for a very brief time in Summerfield School, Moga, and then I cleared my entrance exam for Sherwood College, Nainital, sir. So from class 2 onwards till class 8th, I was there in Sherwood. So most of my growing up phase was done in Sherwood, sir, in Nainital, with all my classmates and all over there. So out of all my classmates, we were just uh, two the children belonging to an army background, and rest all were business into business and were landlords. So everyone from well-to-do family. And my family had a legacy of the military, so we had that. And hailing from Chandigarh, sir. So the childhood was pretty okay. I wouldn't say too good because आपको पता ही है सर हॉस्टल में it is survival of the fittest. So one had True. to just survive. So it was fight for survival. तो पूरा बचपन सर्वाइवल में निकल गया. जब तक बड़े हुए तो पेरेंट्स को समझने में अब टाइम जाता बिकॉज पेरेंट्स के साथ टाइम नहीं बिता सका. And I'm the only child, so I wasn't able to give much time towards parents of for obvious reasons. And then, uh, as a youngster, I went to church every day, and I used to read the Bible. And most time as kids, we never knew. I had Muslim friends. I have Christian friends, Hindus, Jains, Buddhists, and Christians and Sikhs were there. I mean, we were a mixed lot of kids as youngsters. And as he time nikal gaya, sir, and then I did my graduation from MS University, Baroda. उसके बाद I cleared my GMAT and I was selected for New York Institute of Technology. इतना वो Wow. तक नहीं है सर, वो ओके टाइप कॉलेज है for mediocre students like me. So for me it was quite a big deal. And but then sir, सब कुछ हो गया था. I cleared my OTA का entrance exam and SSB in one go. I was from 19 SSB Allahabad. I cleared it from there. Wow. So thing happened all of a sudden in the year 2010 that in the second week of October I had to join OTA, and in the first week of September I had to go to New York and start with my MBA classes. So this was in the month of May, where everything was confirmed. And then, sir, मैं रात को उठा 2 बजे. I just walked up to my dad and I said, "Listen, I'm still in the process of knowing you both. I don't know you so well as a child because I've stayed in a hostel. And if I go away, then definitely I'm going to get entangled into uh, working there. Then whatever loan that I would have taken to pay that off, and probably just with the work pressure, I would have just I guess I would have just settled there as well." So I told my parents that that there's a limit to separation. मैं कहा ये beyond limits हो जाएगा. Very true. So so I told my parents कि then when do I get to be with you, with me? And we are still in the process of knowing each other. So my dad said, "Yeah, I can't say that you're illogical. You're logically correct as well, but end of the day, it's your call because you got to face it. You got to deal with it. It's not me who's going to be present there." So my father had a very practical approach in life, sir. And he was a person who never over pressurized me. He was a very balanced personality. And even now, when I interact with him, he's very balanced. He speaks when required. And he's very calm, even under stress, and very
testing and trying times, I've seen him be act very normal. So the few things I inherited from him, and that is what helped me come up in combat in a natural way. Because class 6 mein he bought me a air gun. So मैं Wow. since kid in class 6 I used to hunt pigeons and everything. So eventually by the time I reached class 10th, sir तो बहुत मारते थे. So suddenly one auntie called me. We were staying in SP Park, Delhi. So she called me. She said, "Why do you kill teethers and all? What do you get?" I said, "Food." She said, "Is there any dearth of food?" I said, "No. घर पे तो सब कुछ बढ़िया बन रहा है." So I said, "Another addition to the menu." She said, "No, don't do it. The animals, they don't have any language to speak to humans. Don't be cruel. Don't do this. It's wrong." So then, sir, वो ये life is of learning phases में होता है learning. So that is how I started learning small things in life. जैसे फौज में होता है ना रोको और टोको. So जब तक Sir. ट्राई नहीं होती तब तक पता नहीं चलता where am I going wrong. So probably that's where most of us youth learn in life. क्या सही है क्या हो रहा है. And eventually, sir, then I started target practicing rather than going on hunting and all that stuff with my air gun and all. So a lot of things changed with time. And as a hostel kid, you know the parameter of affordability of your parents and your domain of your demand, how much you can push them and tell them, I want this, I want that. Yeah. So slowly with time, you become more mature once your father starts telling that, son, this is how much I have, and this is how much you can deal with, and I can't go beyond this because this is my budget. So that is where you start realizing, you start becoming, a young kid starts becoming into a boy once he starts to understand. Once his level of stubbornness and जिद्दीपन जो होता है ना सर छोटी छोटी बातों पे, you start adding logic to it कि यार is it even there or not. So that is how sir my life began. And उसके बाद I joined OTA sir. I was appointed company. Though my father said Naushera mein jana, my father was from Naushera. He's SS31, 1981 commission, and he was best in sports during his time. I was just in the squash team, but मतलब डैड का दिल रखने के लिए मैंने बोल दिया कि भाई मैं एकेडमी की स्क्वाश टीम में हूँ. But yeah, I'm not the best in physicals or the best sport person of the badge. But I told him that I'm there, and I went for hexagonals to IMA and all. So my dad was like, "Chal theek hai." He was still up in pride, and he's like, "Chalo, still you're there in the fight, good enough," and everything. So training went well, sir. It was quite tough initially. मेंटली इतना मैं प्रिपेयर्ड था नहीं. तो रेलवे स्टेशन पे जो वेलकम हुआ हमारा फ्रॉम द हवलदार्स, दैट उसके सामने मैं कुली कुली चला रहा था कि कुली इधर आओ. द मोमेंट कुली रीच्ड नेक्स्ट टू मी, दैट हवलदार जस्ट सेड hey, and the coolie looked at him and he vanished. I was just wondering why did the coolie vanish. So eventually I got to know कि सब अपना बैग खुद उठा रहे हैं. तो मैंने कहा भाई चलो बैग और बेडिंग वाला होल्ड ऑल खुद अपने कंधे पे रखो एंड जस्ट मार्च ऑन स्ट्रेट एंड वेट वेयर द बस इज वेटिंग. तो जाके नाम वाम लिखवाया मैंने. तो इवेंचुअली सर वी वेंट. एंड मैं इतना बताना चाहता हूँ सर टू द ऑडियंस की जो ऑफिसर्स के बच्चे उन पे प्रेशर ज्यादा रहता है. बिकॉज 99% ये माइंडसेट होता है कि ऑफिसर का बच्चा है तो इससे बड़ा ही मतलब इसके फादर के तारे इसके सर पे चढ़े हुए होंगे, ये घूमा होएगा फिरा होगा एंड ही वुड हैव एंजॉयड ऑल द गुड टाइम्स एंड ऑल. तो इन माय केस दैट वाज नॉट द केस बिकॉज मैं साल में सिर्फ 4 महीने घर पे आता था. दैट वाज समर वेकेशन इन जून एंड 3 months विंटर वेकेशन. बाकी होल ईयर आई यूज्ड टू बी इन द हॉस्टल ओनली. सो mentally mindset was like कि I am going in an hostel. It was like that sir. So there was nothing different or awkward that I felt जब मैं गया. एंड मुझे लगा कि मैं अपने आई थॉट दिस इज अ हॉस्टल ऑफ अ एडल्ट फेज नाउ. दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट माय माइंडसेट टोल्ड मी. तो वो भी ठीक रहा सर, एवरीथिंग फाइन. बट वंस द फिजिकल पार्ट बिगैन आफ्टर 15 days, वो जो हनीमून पीरियड खत्म हो गया एंड तब उन्होंने जो चक्री देनी शुरू की ना धीरे धीरे
So basically, sir, the training was like it pushed you beyond your mental and physical limits, and it was, you know, a test every day of your willpower. So कई बार इतना ज्यादा वो हो जाता था एग्जैजरेशन कि ऐसा लगता था कि कोलैप्स होने वाले हैं. सो माय सीनियर्स यूज्ड टू से, समर गिरना है ना तो एक और स्टेप लेके गिरना, जिस स्टेप पे गिरने वाला है उस स्टेप पे मत गिरना. तो इवेंचुअली सर आई केप्ट गोइंग विद द रिदम एंड देन पहले तो भागना ही नहीं आता था. हम तो सर सीधा करके, है ना, सावधान पोजीशन में ऊपर बॉडी, हम तो सीधा भागते रहते थे. Later on they said no, you have to lunge and lean little forward, you have to run on your toes, not on your heels. तुम्हारी shin pain इसलिए होती है. तो then I realized कि all my life I already had things wrong only, मुझे पता ही नहीं था. So that is how sir exposure मिला वहाँ पे, how technically they go into depth in your physicals and जो run backs होते हैं, you know, 10 20 30 40 kilometers के with all that pack and load. I eventually there was my coachmate Sanjeev Kumar Day and me. We both landed up carrying that big pack, दो and around 8 rifles of our batch mates. My And God. पंखा सर उठा तो लिए, अब बाद में हमें सांसना है क्योंकि इतना ज्यादा लोड हो गया था. एंड इवन बिल्कुल. मैं शाउट की भाई आके रोटेट करके ले जाओ वेपन, तो वो सारे गायब because they all became light. So we both, you know, actually struggled it out and they was like, तूर यार अबे इस बार गलती होगी, अगली बार तो किसी को बोलना ही नहीं मदद के लिए. मैंने कहा भाई ये आखिरी रन है, 40 किलोमीटर हो गया जो होना था. मैं कहा ये 30 किलोमीटर में करते तो ठीक रहता, नाउ तो इट इज टू लेट. एंड सर हम भागते रहे, इवेंचुअली वी क्लोज्ड इन एंड वी केम इन द सेकंड स्लॉट, सेकंड पोजीशन. फर्स्ट पोजीशन वाज जिसामी. सो Wow. बच इन अ वे कि रगड़ा नहीं मिला टाइप. And so life went on in academy, sir. One had to be very focused Hmm. and I being in the. just read a comment. I think one of your juniors or maybe your coachmate or somebody who knows more about you. आपको कोई एकेडमी में इंजरी भी हुई थी क्या? सर इंजरी, सर नहीं सर, इंजरीज बेसिकली सर बॉक्सिंग में हुई थी मुझे. तो आई Okay. हैव coachmate Dikshant. So he's a Nepali guy. He's 6 foot tall, too heavy. बाकी मैं समझ सकता हूँ. हाँ. So this was in the senior term. We जूनियर टर्म में सर जो बाव जीत जाता है तो वो सेकंड टर्म में वो बॉक्सिंग टीम में हो ही जाता है. इट इज बाय डिफॉल्ट. एंड सर उस बाव में सर ही गॉट मी इन द रिब्स. एंड मेरा ये वाला जो दांत है, दिस इज टाइटेनियम सर, ये वाला. Oh तो my God. तो आई लॉस्ट माय टूथ. बट वो ये सर माय एटीट्यूड इज मरेंगे तो मरते मरते मरेंगे, या तो साथ लेके मरेंगे टाइप. सो दैट Awesome. वाज माय एटीट्यूड. एंड लेटर ऑन ही केम टू मी एंड ही सेड कि भाई तू, सॉरी यार, बट तू बड़ा ढीठ है, तू मार खाई गया. मैं कहा तुझे भी पड़ी ना? कहते हाँ पड़ी, तो मेरे नाक से भी खून आया. मैं कहा तो मेरे भी आया, बट ठीक है, इट्स ओके. बट मैंने कहा कारकी जो भी यार, यू शुक मी अप वेल यार. तो एंड आई हैव अ वेरी गुड बॉन्डिंग विद हिम इवन नाउ सर. Brilliant. बट हाँ, दैट वाज बैड. आई वाज इन एमएच 3 days. तो का मतलब सर देखो, ट्रेनिंग में मार भी खानी पड़ती है और मारने के टाइम पे मारना भी पड़ता है, मतलब मारना भी बॉक्सिंग पड़ता बॉक्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली. सो दैट वाज द ओनली इंजरी सर दैट आई हैड वहाँ पे. एंड बाकी सर छुटपुट शरारतें होती रहती थी. एंड जूस, जूस पीते रहते थे. 4 जूनियर्स आ गए सर, हाउ आर यू करके, सर वो भी जूस पी गए. तो एंड ऑफ द मंथ बिल बड़ा लंबा चौड़ा आता था. मैं कहा यार मैंने इतना तो पिया नहीं कभी, कहाँ कौन पी रहा है ये? कहते साहब आपने उस दिन वो 4 जूनियर्स के साथ हेलो कर रहे थे तो मैंने उनका भी नाम डाल दिया. किसी ने बोला है. तूर सर के नाम पे डाल दो. तो मैं तो हाँ, टू बी वेरी फ्रीक्वेंटली हैपनिंग विद मी. हाँ. मतलब एक फंडा फौज का बिल्कुल क्लियर है कि अगर सीनियर साथ में खड़ा है तो जेब में पीछे हाथ कभी नहीं जाएगा. हाँ, जूनियर का हाथ जेब पे कभी नहीं जाएगा कभी नहीं सर. जाएगा. जूनियर कह सकता है कि सर चलो एंड आई एम हंग्री एंड मुझे खाना चाहिए.
So by all means, it is a senior's duty rather. It's a duty, not an obligation, but a duty to take care of his juniors well, sir, and be very courteous and respectful to them when it is required. And danda bhi chalta tha, sir. Matlab in the sense to be tough to them when they had to be physically be made more robust. So Absolutely. I used to be one of the disliked seniors. बट इवेंचुअली विद टाइम सर आज आज भी कॉल्स आते हैं, कहते सर हमें याद है, इट इज बिकॉज ऑफ यू दैट आज हम आरआर में पोस्टेड हैं एंड द एंड्योरेंस एंड कहते सर जहाँ पे भी हमारी बत्ती बंद होने वाली होती है ना, वी रिमेम्बर योर रगड़ा, कि जब हमारी बस हो गई थी, दैट इज वेरी द सीनियर्स यूज्ड टू कॉल यू कि तूर अब आजा, हमारा तो 3 घंटा हो गया, नाउ यू स्टार्ट. तो सर जो आपका दिया हुआ रगड़ा था, दैट बिल्ट आवर एंड्योरेंस मेंटली. So, sir, eventually, sir, it's a cycle. True. Seniors went through it, we went through it. Probably then our juniors became seniors, so they made their juniors more tough, like how we made our juniors tough. So I it's think a it never is cycle. only in academy you realize that कोई आपको ये रगड़ा देने के लिए नहीं कर रहा है. बेसिकली आपको जितना रगड़ा देगा, आपकी इंड्योरेंस जितनी अच्छी होगी, शायद किसी लड़ाई या किसी कठिन टाइम पे वो आपके जान को बचाने में काम आएगा. That's the whole perspective. Yeah, exactly, sir, exactly. And it all comes by making them more robust mentally, sir. अगर दिमागी तौर से if they are up for it, I think then the body follows the mind. True. So I really guess that that was the key. So the secret ingredient is the mind, the will. So that is what made them more robust. तो सर bonding आज भी है. I speak to my seniors. Every senior जिसने मुझे रगड़ा दिया था, I'm still in touch with them. Wow. That bond becomes एक bonding बन जाती है. That after passing out, I'm like, अब तो क्या ही करेगा, अब मैं फोन पे बात ही कर लेता हूँ. हाँ सर, और बताओ कैसे हो. अच्छा तू तू कैसा है, and how are you managing the juniors? So I'm like, sir, how you managed me, I'm trying to manage my juniors now. So I'm making them physically fit, mentally more robust and strong. तो वो है sir. Then sir, my first posting was CI. CI was a mind-boggling and a life-changing posting, sir, because I believe no officer got a posting in my batch to CI other than me. And selection is logically इस तरीके से होती है कि जो बेस्ट इन फिजिकल्स हैं, जो पढ़ाई में अच्छे हैं, एंड एवरीथिंग, ऑल पैरामीटर्स आर डिसाइडेड अकॉर्डिंगली. एंड जो हम चॉइसेस लिखते हैं डी क्लासिफिकेशन में, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर बंदा जैसा है उसे वैसी पलटन भी दे अपॉइंट कि भाई यू गो हियर, यू विल बी सूटेड बेस्ट फॉर this particular unit or regiment that you've chosen. So I was very happy. मेरा NRS नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वो चंडीगढ़. सबको चिढ़ाने लग गया था एंड ऑफ द टर्म. मैंने कहा अबे देख लो, होम पोस्टिंग जा रहा हूँ. इतनी झक मारने के बाद इतना अच्छा सुकून तो मुझे ही मिला है. तुम सब जाओ, कोई कोई मीसा मारी जा रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट, कोई कहीं वेस्टर्न पेरिफेरल वाली साइड जा रहा है, कोई JNK जा रहे हैं. तो मैंने कहा अबे यार, बता रहा हूँ ना, जिसने डेडिकेशन के साथ रगड़ा लिया है उसे भगवान उसका ध्यान रखता है. नोबडी न्यू कि कौन सी पलटन कहाँ है. मोस्ट ऑफ अस, मेरी तो खासकर, nobody was telling where my Paltan was. So I came to Chandigarh, and eventually, sir, my father, being a retired colonel, he very well knew where my Paltan was, but he kept avoiding. And I will not name the area where I had to report because थोड़ा classified है. हाँ जी, But हाँ like, जी. डैड यार यहाँ जाना है, दिस इज द एरिया, ये नाम है. अच्छा वो तो यहीं पे ही है यार, 10-15 मिनट दूर है यार, डोंट वरी. मैं कहा अच्छा. मैं कहा तो अभी करना क्या. ही सेड चिल यार, अभी 4-5 दिन तू मजे मार. तो आई वाज चिलिंग आउट. Then 2 days prior to my reporting, dad said let's go and we will buy you good woolen clothes. मैं कहा woolen clothes for what? कहते इनर ले ले, वो नेवा क्विल्ट के जो आते हैं. तो मैं कहा भाई यहाँ पे भी इतनी ठंड होती है, चंडीगढ़ और कसौली यही है, तो यहाँ पे कहाँ इतनी बर्फ गिर रही है जो आप बोल रहे हो. क्यों. मैं कहा यहीं पे ही है ना पटना, तो चंडीगढ़ यहीं रिपोर्ट करना है. कहते जस्ट बाय यार, तुझे टाइम नहीं मिलेगा, बहुत बिजी शेड्यूल होगा. ऐसे ओके, मैं बातों में आ गया, मैं चला गया. तो आई परचेज सर ये जैकेट, वो जैकेट, ये इनर, ग्लव्स, जुराबें. मैं कहा डैड आप तो ऐसे करो जैसे यहाँ पे बर्फ गिरने वाली है 1 महीने बाद. हम्म.
कहते तेरे काम आएगी, जस्ट टेक इट। मैं कहा ओके। पैकिंग हुई, देन डैड ने बिठाया मुझे गाड़ी में। वी वेंट एट 5 o'clock, वी रिपोर्टेड देयर। देन एट द रिसेप्शन दे सेड साहब आप अपना सामान वगैरह दे दो, आज आपकी फ्लाइट कैंसिल है। मैं कहा फ्लाइट? मैं कहा कहाँ जाना है? मैंने कहते साहब ज्यादा दूर नहीं जाना, यहाँ 55 मिनट पे ही रास्ता है, तो 55 मिनट में आप पहुंच जाओगे। आई वाज लाइक हाँ फिर तो 55 मिनट नॉट मच, जस्ट एन आवर अवे। मैं कहा दिल्ली दिल्ली साइड, तो मैं कहा यार वेरी वियर्ड, मतलब व्हाई डू आई नीड अ प्लेन टू गो टू माय प्लेस यूनिट। तो उसके बाद आई कॉल्ड अप डैड, माय डैड हैड ड्रॉप्ड मी एंड ही वेंट होम। तो आई कॉल्ड अप डैड, मैं कहा आ जाओ यार, आज का दिन तो फ्लाइट है नहीं, तो मैं यू पिक मी अप, तो घर पे चिल करेंगे। तो डैड से ठीक है गुड यार। क्या डैड से इससे पूछ भी ले कल कितने बजे आना है। तो आई आज मैं कहा कल कितने बजे रिपोर्ट करना है। कहते साहब रात को 2:30 बजे आप इधर पहुंच जाए। मैं कहा रात को 2:30 बजे क्यों? कहते नहीं साहब वो पैकिंग और सामान और यहाँ पे फॉल इन होता है। देन आई कॉल्ड अप माय डैड, मैं कहा रात को 2:30 बजे है। डैड से ठीक है। वी केम सर, घूमे फिरे। देन होल डे आउट ऑफ एक्साइटमेंट की एक दिन और मिल गया। आई वाज चिलिंग आउट विद माय डैड एंड हम इलांटे मॉल वगैरह गए। माय डैड ड्रॉप्ड मी नेक्स्ट नाइट एट अराउंड 12:30। 2:30 बजे हम वहां पे रिपोर्ट कर गए। 3:30 बजे हमें टारमैक के ऊपर बसों ने छोड़ दिया। 3:30 बजे ठिठुरती हुई ठंड में। एंड आई वॉज वंडरिंग यार ये है क्या, हो क्या रहा है। ऑफिसर भी बन गए, तारे भी लग गए, ये अलग से तारे दिखा रहे हैं रात को जगा के। इवेंचुअली सर क्या हुआ दैट फ्लाइट लैंडेड, मतलब फ्लाइट गॉट रेडी एट 5:30, वी टुक ऑफ एट 6 एंड व्हेन वी लैंडेड आफ्टर 55 मिनट्स एंड वो होता है ना सर कि गेट खुला और वो हवा का झोंका दैट हिट माय फेस एंड आई वाज लाइक ओ ब्लडी हेल, ये कौन से रेगिस्तान में आ गए हैं जहाँ पे सिवाय पहाड़ियों के कुछ भी नहीं है। इट वाज लिटरली नथिंग सर। सो वी लैंडेड एट थॉइस का एयरबेस। एंड अब तो थॉइस तो गूगल मैप्स पे भी है, इंटरनेशनली नोन एंड नाउ अ टूरिस्ट Yeah, प्लेस। तो आई कैन वेरी वेल से नाउ कि आई वाज एट थॉइस। वहां पे लैंड किया एंड सर ठंड, आई हैड टू लिटरली, मतलब जवान्स देयर गेटिंग ऑफ द प्लेन वर टेलिंग मी साहब कुछ पहन लो, यहीं पे हैप्पो हैको हो जाएगा। आई गॉट हैप्पो हैको। मैं कि ये क्या होता है? कहते साहब फेफड़ों में पानी और दिमाग में भी पानी घुस गया तो कुछ नहीं होगा फिर। मैं कहा यार ये तो साइकअप कर दिया इन्होंने। देन आई लिटरली ओपन अप माय ट्रंक एंड एवरीथिंग सर। फिर मैंने कपड़े कपड़े पहने। देन इवेंचुअली सर वेंट टू द पल्टन, स्टेड विद द ट्रूप्स, जो होता है इनिशियल फेज ना सर। तो ट्रूप्स के साथ रहा एंड सर मतलब हालत खराब थी। मतलब मैं तो रात को पानी भर देता था, सुबह उस पे बर्फ जम जाती थी। तो हवलदार हवा सिंह था। सर हवा सिंह, मैंने कहा भाई ये पानी का क्या सिस्टम है? कहते साहब अभी हमाम करके एक चीज होती है, हमाम में ये पानी डाला जाएगा, उससे गर्म पानी आएगा। तो मैंने कहा तो कैसे डालना है? कहते आप बाल्टी उठाइए और मेरे साथ आइए। तो जो मेरा वो इनिशियल अटैचमेंट था विद ट्रूप्स, उसमें काम मेरे बंदों ने मेरे से ही करवाया। एक दो ही थे जिन्हें आइडिया था कि नहीं साहब का ध्यान रखना टाइप, बट मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं था सर, मैं अपना काम ही खुद भाग भाग के कर रहा होता था। तो वो हुआ, देन फेमिलराइजेशन हुआ एरिया का। इवेंचुअली सर आई इट टुक मी 3 days टू क्लाइंब द पोस्ट। डाइनिंग इन में दारू के जोश में आई टोल्ड यू सर आई चैलेंज यू टू द टफेस्ट पोस्ट। oh तो my God. जो साहब ने वो जज्बाती होके, माय सीईओ टुक इट टू हार्ट, ही सेड ओके यू वांट इट गिव इट। So I went to a post which was a non-officer post only for jawans. So the officers नीचे logically thought कि ये एक वो ट्रूप्स के साथ लाइन अटैचमेंट का एक वो हो जाएगा, मॉड्यूल काइंड ऑफ अ थिंग। और वो मॉड्यूल ऐसा चला ना सर, 5 महीने मेरी बत्ती बंद हो गई। विंटर कट ऑफ पोस्ट, रास्ता बंद। ठीक है, वहां बस वो पाकिस्तानियों के खच्चर देखते थे हम जाते हुए दाएं बाएं। मैं तो इतना बोर हो जाता, मैं यार करें क्या। एंड कई बार फोन आता साहब आपके वहां पे मौसम कैसा है? मैंने कहा धूप आ रही है
है, मुंह काले हुए पड़े सबके, कुछ है नहीं यहाँ पे। मैं तुम तो रिपोर्ट ऐसे पूछ रहे हो जैसे यहाँ शॉपिंग मॉल है, हमने शॉपिंग करने जाना है अभी, है वहां पे वो मौसम कैसा है? कहते नीचे बारिश हो रही है। सो इतना वेदर का पैटर्न वाज सो डिफरेंट सर। वी वर एट 20,000 feet, वी वर एट 19,800 feet, My एंड God. बेस कैम्प हमारा वाज ऑलमोस्ट एट अराउंड 10,000। तो आप लगा लो सर कि 3 दिन हमें लगते थे टू रीच अप टू दैट हाइट, एंड इट वाज वेरी ग्रूलिंग सर, वेरी टफ। एंड इन्फेंट्री ऐसी जगह है वेर यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। True. मतलब कोई जवान आपका सामान नहीं उठाएगा जब आप एज न्यू लेफ्टिनेंट आओगे। दे वांट टू सी भाई, देखते इसमें दम भी है या नहीं है, या टाइम पास बिल्कुल. टाइप। तो आई कैरिड माई ओन लगेज सर। फिर बीच में एक बंदा था, आई रिमेम्बर हिज नेम बिकॉज हिज नेम वाज अक्षय कुमार। तो अच्छा. साहब छाती में दर्द हो रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं, बैठ जा बैठ जा। मैं कहा अपना बैग मुझे दे दे। एंड पोर्टर्स चलते हैं सर हमारे साथ, तो आई गेव माई बैग टू द पोर्टर। मैंने कहा भाई पकड़ो, मैं इस बंदे का बैग पकड़ता हूँ। वहां पे बीएफएन अभी तक कहता सर इसे नीचे भेज दो, कहता नहीं मरने वाला है यार, मरना होता मैं कहा ये तो अभी लेट के अभी खत्म भी हो जाता। मैं कहा नहीं, ही इज फाइन। एंड देन सर मैंने जैसे ही उसे ठीक ठाक किया ना, वो बोला हाँ साहब अब मैं ठीक हूँ, अब मैं रेडी हूँ चलने को। दिस बगर गॉट अप एंड स्टार्टेड वॉकिंग। एंड सर मैंने जब आई ट्राई टू पिक हिज बैग, मेरी तो बत्ती बंद हो गई। इट वाज ब्लडी 10 times द वेट। एंड लेटर ऑन आई रियलाइज उसके अंदर जूस, बादाम, काजू, पता नहीं महीने भर के कहाँ का राशन इससे उसके अंदर डाला हुआ था सर। मतलब मेरी तो जीभ बाहर आ गई थी, लाइक अ टॉवल, मतलब तौलिए की तरह जीभ लटक गई थी मेरी। मैंने कहा भाई ये क्या है। एंड आई कैरिड इट टिल द फर्स्ट डे, मैं जहाँ पे हमें रुकना था। सेकेंड डे आई इंश्योर्ड ही कैरिड द सेम बैग। मैं क्या किया, मैं कहा हाँ इतना ही भारी है। मैं कहा पोर्टर को तो नहीं पकड़ा दिया? कहते नहीं साहब। मैंने कहा अब तू उठाएगा इसको, और तूने मेरे सामने चलना है पूरे रास्ते। अब तेरा दिल बिल्कुल ठीक हो चुका है, मेरा दिल कमजोर जरूर पड़ चुका है। तो देन ऑल अदर ट्रूप्स वर स्माइलिंग एंड ऑल ना, कि चलो देखते साहब में कितना दम है टाइप। तो धीरे धीरे सर ये टेस्ट करते हैं, द सोल्जर्स टेस्ट यू, कि Absolutely. दम वाला भी है या टाइम पास टाइप है एंड ऑल। तो दैट वाज द थिंग सर। फिर वहाँ पे ब्रीफिंग्स होती थी रात को हमारे, मतलब अलर्ट ड्यूटीज होती थी। I'll not tell exactly what, but yes, we used to have a drills and we used to have everything in place. So things were quite demanding. Weather was very gruesome, sir. It was fight against weather, and officer faces lot of isolation. True. मतलब I had to wait ninth in line, last to speak to my family. एंड उस टाइम पे सर वो सैटेलाइट रेंज से कई बार बाहर भी चली जाती थी। वो डीएसपीटी होता था सर, Mm-hmm. डीएसपी दैट वाज द सैटेलाइट फोन टर्मिनल सर। सो उसमें फॉर अ लिमिटेड टाइम बंदे बात करते थे, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। तो आई आल्सो यूज्ड टू स्पीक होम, एंड था सर, इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग मेंटली, फिजिकली। एंड मेरा एक बंदा भी बीमार पड़ गया था, एंड ही फेल सो इल कि उसको जब ड्रिप लगाई, आधे घंटे के बाद ड्रिप ऑल्सो यूज टू फ्रीज। टेम्परेचर यूज टू बी -30, -30, -35। तो उसकी ड्रिप को भी थोड़ा सर वो हाथों से रब करके गर्म करना पड़ता था। नहीं वो ही नाउ रिटायर्ड, अंबाला में है। Okay. एंड उसे इवैक्यूएट करना था, एंड ही हैड, उसे अल्सर हो गए थे सर, बिकॉज वी यूज्ड टू हैव द प्रिजर्वेटिव वाला खाना Yeah, yeah, जो होते हैं ना सर। तो उसकी वजह से ही स्टार्टेड वॉमिटिंग ब्लड, and as a result I had to evacuate him, and it was very challenging. And I, I told Nayak Ufran, because the drip bhi nahi chad rahi thi, he was in very serious condition. I mean, few of the troops were also like, Saab, he might not live. So I just asked Nayak Ufran, can you make it, like for the sake of your child and your wife, can you pull it through for another 4-5 hours? He said, साहब होने से तो होगा, करूंगा।
And as a result, sir, this guy and his willpower, my I kept him busy. Okay. And so, sir, then we evacuated him. And Hector came. Hector did not land also. उसकी belly Hmm. में हम hook लगाया with the netting. And this guy was evacuated eventually to Hundar. Hundar वहाँ पे है जगह तो. So things were quite tough in Siachen, sir. They were very demanding troops at times. Never you, मतलब कई बार होता है ना sir कि mental frustration. You know, everyone's mental level of tolerance is different. Absolutely. तो इतना हो गया था कि you know I had to actually calm down the troops. Stay calm, don't worry, and I'm here. If I'm here, what is wrong with you? If I'm youngest, I'm the youngest amongst you all. If I am not having issues, if I am here like a brother to you, brother officer, and I'm here, why are you worrying? You are my responsibility. What are you worried for? I said you, and then I never used to bother them much, sir. And हाँ training, weapon training बल्कि मेरी चलाते थे. So that is how in a way I used to keep them busy कि उस्ताद आप मुझे सिखाओ हथियारों के बारे में. So that is how, sir, I learned more about weapons at Siachen. वहाँ पे time था, so I got a lot of tactical know-how and weapon handling के बारे में मुझे ज़्यादा extensively वहाँ पे सीखने को मिला. Hmm. So, somebody has said hi from Poland, and I'm sure he would be knowing you. That is why this question is coming from there. And if there is a story around it, I don't know. Uh, हाँ sir, there is. is there something around your choice of arms in academy before the POP? कुछ है क्या? Sir, I had selected, me being Khalsa, I selected Punjab and Sikh regiment. मैं कहा घर के आसपास रहेंगे बढ़िया है. My हाँ. dad said, "यार, you join ASC ordnance." I said, "I'm sorry, I can't. I want to see combat. I am not here for मतलब मेरे बस की नहीं है, you know." So I told dad, मैं कहा यार I want action in life, dad. ऐसे थोड़ा ना है क्या. मैं कहा you played hockey being in ASC, so it was the favorable arm for you. मेरे लिए तो I want combat, so I want action. So Hmm. my dad, don't wish for something too soon. You will not realize what hit you. Hmm. This I realized in my UN tenure. So that time, sir, फिर मैंने भरा पंजाब सिख एंड थर्ड मैंने भरा था राजरफ, Okay. राजपूताना राइफल्स. बिकॉज सर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आर somewhat connected in a way Yeah. in terms of population mixture, also Yeah. demography, Yeah. है ना, ऑक्यूपेशन, फार्मिंग, एवरीथिंग. सो आई True. थॉट इसी में रहेंगे अपने बंदों के साथ तो बढ़िया रहेगा. एज अ रिजल्ट पंजाब और सिख नहीं मिला, आई गॉट राजरफ. एंड लेटर ऑन आई लर्न कि राजरफ का सेंटर इज इन दिल्ली. तो आई वाज इवन मोर हैप्पी कि चलो इट इज नियरर टू माय होम. Okay. तो तब इतना वो फैक्टर नहीं था कि नियरर टू द होम, क्योंकि पूरी उम्र तो हॉस्टल में ही पड़े थे सर. बट आई वाज लाइक कि चलो एटलीस्ट अब जाके घर के कुछ पास होंगे तो ठीक है. एंड तब इतना कॉन्सेप्ट नहीं पता था आर्मी का. आई थॉट कि अच्छा दिल्ली में है सेंटर, चलो भाई दिल्ली में ही पक्की पोस्टिंग होगी, आई विल स्टे थ्रू आउट इन दिल्ली. But slowly, I later on I had a lot of arguments with my father. I said, "Yaar, you never told me how army works." He said, "Good, now I didn't tell you. Now everything's new to you. They experience it." True. So, sir, uh, then I went to UN. UN was, sir, psychologically very क्या कहते हैं, challenging, physically very demanding, sir. Challenging and demanding both. ठीक है, sir. And it was a life-changing experience. आई मीन पीपल कंप्लेन, यहाँ पे लोग शिकायत करते हैं कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कपड़े नहीं है ढंग के, है ना, यूटेंसिल्स नहीं है ढंग के, गाड़ी चाहिए, फोन चाहिए. यू गो टू साउथ सुडान, एक 4 साल का बच्चा, उसे सिर्फ एक रस्सी चाहिए जिसमें हुक्स बना के वो वर्म्स अटका के पानी में फेंकता है, टाइड विद अ लॉक और अ स्टोन, और उससे खींचता है एंड उसमें ही लोहे की वायर से हुक बनाता है. उसमें अगर फिश इंटैंगल हुई तो वो खाना खाएगा, वरना ही स्लीप्स.
bhuka pet, hungry all day. And this is a 4-year-old kid. So I have a kid who is 5-year-old. My elder son, my young son is 1 year old. Okay. So these were the things that actually shook my soul. कि एक 4 साल का बच्चा अपना खाने का बंदोबस्त खुद कर रहा है. फॉर देम प्रायोरिटी वाज नॉट कि मेरे तन पे कपड़े हुए. उनके लिए प्रायोरिटी एक ही थी कि एक वक्त का खाना मिल जाए बस. एंड पानी तो दे यूज्ड टू गो एंड ड्रिंक वो नाइल रिवर का वाटर सर. एंड देयर बॉडीज हैड बिकम सो इम्यून दैट उन्हें ना ही मलेरिया होता था ना डेंगू होता था. क्योंकि बचपन में उनको मस्किटोज काटते रहते थे वगैरह. सो देयर बॉडीज बिकेम सो इम्यून. उन्हें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी सर. दे वर ओके विद इट. एंड हम तो मेफ्लोक्विन खाते थे. तो मेफ्लोक्विन वाज मैंडेटरी टू बी टेकन देयर फॉर मलेरिया. Malaria. हाँ सर. एंड बस सर. एंड एज अ रिजल्ट देन सर वॉर हैपेंड. The flight in which we had to go, उसके अंदर सर the flight which we were boarding उसके अंदर पहले लेफ्टिनेंट कर्नल महिपाल फ्रॉम मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री उनकी मॉर्टल रिमेन्स I collected from the cargo terminal. फिर four जवान्स from Majar regiment उनके मॉर्टल रिमेन्स I took them for the wreath laying. And sir, the soldiers were lined up at the coffins passed by, and at the same time they were boarding the same flight. So आप एक soldier का mindset देखो that he knew he's going into the of death, going into the jaws of death. And that atmosphere of being calm and relaxed ना sir वो एकदम ही कम हो गया. That eerie and a very scary kind of a silence crept in. और वो चुप्पी इतनी डरावनी थी ना सर that whoever used to speak ऐसे लगता था कि वो ना एक सिंक को तोड़ रहा है. एक प्रॉपर एक रिदम जो बनी हुई है ना साइलेंस की वो कोई तोड़ रहा है ऐसे प्रॉपरली फील होता था. एंड we as officers and soldiers wanted to talk to each other but our eyes communicated a lot. I mean, I could look into the young boys who were just 20, 21 year old, 19 years old, looking into me eyes, and I knew they are petrified and probably lot many things going across their mind. But I purposely never wanted to address such a sensitive topic. I never wanted anyone to react at that particular moment because it was a very fragile incident moment that was there that time. That atmosphere was very uneasy. And on landing, sir, we landed. Never expected what we were expecting a country to be like. And you are actually landing on a foreign land where you are probably disliked. You are not wanted. Your presence is itching in the eyes of the nationals over there because they knew the country is in a very big turmoil. And as a result we were also not seen in a welcoming way actually. ये क्यों आए? And obviously sir, let's put India in that situation, God forbid. Sure, but sure. हमारे लैंड पे कोई पीस कीपिंग फोर्स आके लैंड हो रही है इंडिया में and our soldiers are looking on. I'm sure nobody would be welcoming them with garlands. Absolutely. And कोई जप्पी तो डालने आएगा नहीं इनको. So things were quite difficult sir. Adjust करने में बहुत problem आई. Lot of threat levels were there initially, and they used to track our movements. So we used to obviously change routine in terms of our going to the city. And eventually sir फिर attack came, and attack came on the 25th of December. पर put मिल गया था 23rd of December को. So my CO said to all the officers that भाई establish a vantage point क्योंकि Sarkande around the logistics base was around 8 feet. He said I have a visual.
I do not have visual of what is coming towards me to attack. So do something. So sir, on 23rd December की night, 11 o'clock, there were two containers already there. I went and I told Havaldar Jitinder, he was with me, sir, Alpha Company. I said, उस्ताद इन दोनों के ऊपर ना एक कंटेनर लगाओ हॉरिजॉन्टली. वो ऐसे थे, इट वाज समथिंग लाइक एक, ऐसे इसके ऊपर ऐसे लगवा दो. As a result, sir, we got put, and then हमने क्लाइंब तो कर लिया. We climbed it without a ladder. वो दरवाजे खोल के ना सर. For 72 hours, Havaldar Jitinder and I were on that iron container, and temperatures used to soar at 50-52 degrees at 10 o'clock in the morning only. इतनी गर्मी होती. So 72 hours we were on top. 23rd December night we did not have a dinner because हमें input मिल गया था, and Malakal city का governor came in and took refuge in a UN camp. Zabardasti. And we told him that, listen, you got to move out because they will come for you. And if you're found here in the compound, they're going to hit us bad. We'll buy a lot of casualties. You need to leave. So he started saying, I've called up the president and he's talking to the UN people. I'm a powerful man. I'm the only one who will get you rescued from here. So you think twice if you want to send me out or not. There are a lot of people from the within also, sir, from the locals. But officially and ethically, morally, it was incorrect on his behalf, the governor of Malakal. So on the 24th evening, he was convinced to leave. Tab tak we had around 15,000 refugees who had already entered. The 15,000 people had already moved in. This guy, while moving out, his bodyguard cocked his MP5. Heckler and Koch थी इसके पास MP5. He cocked it and he pointed it at my chief of operations. Okay. ठीक है sir. He pointed it out at him at the Bravo gate. And the moment he did it, I told my boy who was up on the container, I said, load the LMG. And I said, अच्छे से आवाज के साथ load करना है. He properly loaded it with all the noise he could make. इसी बहाने सर उसने ना ऐसे ऊपर देखा. And I was already taking a headshot. मतलब मैं head पे aim लिया हुआ था. And I told him, my friend, don't even think of doing what you are just planning to do. Don't think of it. You will not leave alive from here, nor will your this other official, जो governor था साहब ने. And I told, I shouted, take his weapon. Take his weapon or I do what I have to do. So he said, wait. And then वहाँ पे the concerned officer was there. He's still serving, so I'll not take his name. So he looked at me. He said, कि तू थोड़ा आराम से. मैं कहा, sir, you don't react. You are at a gunpoint. Just keep looking at him. Let me manage. And I told him, my friend, you move right now, or you will not live in the next minute. I'm giving you 30 seconds. Decide. And sir, then the governor shouted at him, abused him or whatever. He grabbed his weapon from him, and then he told him to sit. Governor खुद came onto the steering wheel, जो पीछे बैठता था. It was such a worrying situation. And the bodyguard, he looked at me in a look as in कि तुझे मैं देख लूंगा, that I'll have you, that kind of a way. So I also gave a smirk. I just smiled back at him. And all the best. And hope not to see you again. And then sir, this guy sat and these guys then left the base. Uske baad sir, then the fighting began sir. There are videos online जो आपने देखी हैं. That rebel shot in the leg. We blew up a tank.
which was reportedly planning to attack us, which was eventually taken over by the rebels from the SPLA, the government forces. And crossfire में sir first day पे 18 people passed away in the camp. Okay. So this was just blind fire. And there were thousands of bullets. I mean, not even thousand, lakhs of bullets being fired at one time from both the sides. Our camp was right in the middle. And why the government forces chose their locations and trenches near to our location was, if they were to be overrun, then they could run into our camp and surrender. Okay. But that backfired, sir. We were attacked by the rebels because probably because it was a fight between Dinka tribe and Newer tribe. So Newer tribe knew कि लास्ट में जैकपॉट तो यूएन बेस कैंप है. So it was typical like that movie, sir. वो ब्लैक हॉक डाउन वाला सीन ही होता है. Mm-hmm. You're surrounded by these savages who are just waiting to kill you, their bloodshot red eyes just staring at you, wanting you to just be taken as a clean shot, clean kill. That is where, sir, we deployed our MMGs and our sniper rifle. I operated with the Dragonov 7.62. We were told in UN, shoot when shot at and shoot below the waist. But that time, the way they had executed the people outside in the city and how they had massacred them in the churches and in the hospitals, we learned that after 2 days when we went into the city. But things were out of control. So a lot of human right violations, and child soldiers were their main weapon. Child soldiers को तो पी के दारू पिला के ये बोल देते go attack. They used to come and attack without knowing the consequences. And sir, when I saw them charge to our camp, I had this eerie feeling that firstly time was against us. We didn't have time to react. They were Mm-hmm. we were prepared. We were mentally prepared to die. I told my men, I said, जितना ज्यादा सोचोगे जिंदा रहने का उतना प्रॉब्लम आएगा. You just focus on killing them. एंड तैयारी ऐसे करना है, तैयारी ऐसे होनी चाहिए तो मरेंगे तो मारते मारते मरेंगे या फिर इन्हें साथ लेके मरेंगे. But we will ensure that in their history books they mention about us, how we died fighting, rather than our country writing a history of we soldiers getting perished on foreign land. I said we should instill the fear of God in them, that we are here and we are here for a meaning. We are not here to do time pass. And if it has come to our life, then there is a price for everything. They will pay for it before we pay for our life. So it was a very emotional moment. So we left messages to our parents, to I left messages to my fiance, to my few close friends, and I somehow, I don't know, sir. I told my father. I said it was quite difficult. मैंने recording छोड़ी थी. I told in that recording I told my father, Dad, you can hear in the background firefight is happening, and trust me, I'm going to go down fighting. So tomorrow, if you see my body riddled with bullets, be proud that I died fighting. I didn't die in vain. And trust me, I'll give them a tough fight and everything. So then it became quite, it's a very emotional moment. My eyes were moist. I could not afford a tear trickle down my cheek because I had troops around me. So that emotional control was very extreme at that moment for me. And there is no, you can't afford any sign of weakness during such times. True. There is no, there is no chance of error, and there is no time for emotions that time. So that is the time when you have to act and react as what you're trained for. And eventually, sir, that what I realized, training instills in us the instinct to survive. कि मुझे True. जिंदा रहना है. I have to live so that my boy next to me can live. And I am more worried about the soldier next to me. कि
उसके गोली लगने से पहले मुझे गोली लगनी चाहिए. So I should be more efficient in taking my aim and neutralizing the enemy or incapacitating the enemy. तो हमने सर, I told my troops, मैं कहा headshots लो, don't bother, because ultimately they are coming to kill us. They are not going to see who we are. वो नहीं अब हिप के नीचे गोली नहीं चलाने वाले हैं, वो हमारे मुंह पे गोलियां चलाएंगे 30-30, 40-40, ताकि कोई पहचान भी ना सके. I said just don't leave them. And in war, when an officer takes a call like this, a bold one, I told them, I said, if I die fighting and you guys survive, and if there is in case there is an inquiry of something that takes place, I said, you will take my name that I had told you this. I am taking full responsibility of the orders that I'm giving you, and you will exactly do what I have told you to do. उस टाइम सर थिंग्स वर वेरी, द एड्रेनलिन बहुत हाई था, घबराहट इतनी थी कि I could actually feel my heart beating like a drum in the open field, जो parade ground में होता है. That was, I could actually feel my heart beat. Every one of us. I mean, we could feel every trickle of sweat coming down from our face. We could feel the gust of wind कि अब हवा तेज हो रही है या अब हवा कम हो रही है. We could actually feel the earth below our feet. I mean, we were so connected spiritually to the environment around us that we were ready. We were ready for martyrdom. We were like, कि this is it. Now, अगर अब जाना है, तो we have to put it up. We have to put up a fight that they are going to remember all their life. And it was very overwhelming, sir. I mean, it is very difficult to comprehend for a combat officer, because we are not programmed to express ourselves emotionally, sir. आपको पता ही है how we are. True. Absolutely. Quiet, है ना सर. तो ये है, बट जितना भी मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ मैं अभी जितना बता सकता हूँ मैं बता रहा हूँ सर. बट as on date, as we speak, there has been no movie made on a UN tenure of a Paltan which has faced such a situation. I mean, there have been movies on 1962 war. There have been movies on 1971 war. There have been movies on Kargil war. I mean, you name it, whatever fights that we've had, there have been movies made on it. But a movie in terms of a UN tenure and a Paltan being surrounded and ambushed by the enemy forces with no backup. We never had backup. When the war started, the Japanese contingent evacuated, the South Korean contingent evacuated, the 45 Navy SEALs came from US to take their American citizens back. So ultimately, we Indians were there and we were dug in. We knew that there is now no going out. And sir, we got every and each bullet and round, right from BMPs to the rocket launchers, to the MMGs, to the LMGs, to the pistols, to the rifles. Everything was lock, stock, and barrel ready to shoot. And we were loaded, sir, loaded. We had ample ammunition to carry on for a month or two if it had come to that. And we were ready, sir. And things were not that rosy, sir. इतना मतलब पहले 6 महीने तो अच्छा था. हमें लगा गलती से भेज दिया है. फिशिंग करते रहते थे. मेरी वेपन हैंडलिंग की क्लासेस चलती थी. बट लुक एट द प्लानिंग ऑफ गॉड, सर. डेस्टिनी देखो. दैट मतलब the weapon handling that I was taught by the ustads there. And just imagine, sir, it actually helped save my life in reality. स्नाइपर राइफल कौन से लेफ्टिनेंट को आता है एक स्नाइपर राइफल ऑपरेट करना? विच लेफ्टिनेंट नोज? आई मीन आता होगा. Very true. बट सर इतना एक्सपोजर थोड़ा था कि यू आर एक्चुअली इन अ कॉम्बैट सिचुएशन. एंड आई ऑन ग्राउंड यूज दीज वेपन्स
I terminated targets, and I started taking headshots, and eventually CO put in ustads or havaldars who had gone in RR tenure during their time. They said be with Lieutenant Samar, and Lieutenant Samar साहब को आपने गाइड भी करना है और उन्हें सही दिशा भी दिखानी है. And separately, my CO used to tell me that Samar, you are an officer, and lot of expectations from you. Combat situation is already started. Troops are looking up to you. This is the time to lead by example. You got to lead into battle, first. So that was the motivating factor, sir. And I saw mortal remains of troops and injuries. My immediate senior officer lost his eyesight because he was hit with a particular instrument with glasses inside onto his eye within the camp. So he got blinded by one eye, and there were many non-fatal wounds. There was a situation in which I was almost killed by a bunch of 30, a mob of 30 young men with machetes. Uh, the Dinka tribe was en route to the UN hospital within the camp. तो जब न्यूअर ट्राइब का कोई भी पेशेंट जाता था, they used to actually grab them and nab them. उनके मुंह पे मतलब they used to put something onto their mouth, gauge their mouth and all, and they used to slit their throat. So that morning when I was deployed there with my QRT, होता है ना सर, कॉलेज के लड़के ग्रुप में जा रहे तो कोई मस्ती मस्ती में एक ही गर्दन पकड़ लेता है दाएं बाएं, और इन्होंने इसको लेके साइड पे ले गए, एंड देन एक सीमेंट के ब्लॉक्स आते हैं सर वहां पे हॉलो वाले, वो उठा के दे killed that boy in front of her. And I mean, till the time the moment we actually saw the brick fall onto his head and his head open up, उससे पहले हमें लग रहा था कि कॉलेज के लड़के आपस में मजाक कर रहे हैं. They were pushing him around, laughing and everything. And so then I sprinted to the spot with one more guy with me of the QRT. Amit करके था, rifleman Amit. And the moment we reached there, this guy is dead. Then I radioed in the Red Cross that please come have a look at the body and take it. They used to come for body recovery. The moment this thing happened, I went to the main gate towards the UN compound. वहां पे 3 नुअर वाले भागते हुए आ रहे थे, एंड एक के मशटी से यहां से लेके यहां तक पूरा खोल दिया था. आई कुड सी हिज वाइट कलर का स्कल, and मतलब it was just water dripping, blood was like water ऐसे नीचे. And I asked what happened to you, and they said the Dinkas have attacked us, we were going to the hospital. Then sir, I cocked my weapon, मैंने हवाई फायर किया, एंड ये लोग ना ऐसे हाथ ऊपर करके ना ये ऐसे कर रहे थे अपने छाती को ऐसे. The ones who were coming to kill us, they were with the notion कि छाती मेरी टारगेट है, come and get me if you can, and take a shot at her chest. ऐसे जैसे टारगेट नहीं बनता गोल गोल, तो गोल गोल इशारा करके ना अपनी छाती की तरफ ऐसे कर रहे थे कि here I am, take a hit at me, come on. And I was shocked and amazed. I was like, yeah, they are not scared at all. Eventually I took a shot and मैंने उनके बिल्कुल टांगों के आसपास किया, जिसमें एक के शायद रिकोशी होके गोली लगी. Once that happened, they realized this guy means business. ये डराने वालों में से नहीं है. This guy will kill. I pulled 2 guys from their collars, जमीन पे गिरे हुए थे, injured, with me, ऐसे जैसे आप 2 सीमेंट की बोरियां नहीं उठाते सर हाथों में. So I was facing the route where I have to go,
एंड मैं इन दोनों को नहीं, दोनों लेटे हुए, मैं इनके कॉलर से पीछे से ऐसे पकड़ के आई एम पुलिंग देम विद मी, जैसे कि कोई बोरा हो, सैक ऑफ सीमेंट और समथिंग. आई वाज पुलिंग दीस पीपल एंड आई केप्ट शाउटिंग टू मी कि "Oti, जल्दी आओ." And they were again surrounded by people with machete. That time a BMP driver switched on the BMP. This is within the camp. कैंप के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ सर, ये कैंप के अंदर की बात है. उसने बीएमपी ऑन करके, बीएमपी तो आपको पता है सर, फुल स्पीड जिस आवाज से आती है तो True. अच्छे अच्छे दाएं बाएं हो जाते हैं. So when this guy came, full speed towards me, I didn't stop. I knew कि इससे ब्रेक लगाना ही है. I have no time to save myself or anything. क्योंकि मेरे पीछे बस 15 मीटर दूर they had almost got to me with the machetes to strike me, sir. And तब फिर I turned back जब बीएमपी बिल्कुल मेरे पास पहुंच गई. And जब बीएमपी ने ब्रेक लगाया ना, सर, that gust of dust and everything, visibility zero हो गई. And तब I turned about. Again, my weapon was already loaded. I fired 3-4 rounds near the feet again. तब by that time QRT भी BMP के पीछे पीछे पहुंच के, it reached out to both the injured guys. They reached out at me. They pulled me inside the BMP, पीछे वाली side. कहते साहब आप अंदर बैठो यार, you would have been, हो जाता काम आपका. कहते, and out of those two guys who was hit on the head died. He died My after God. half because of excessive bleeding. That guy passed away. So you were able to save one guy. So यूएन में लड़ाई कैंप के अंदर भी थी एंड कैंप के बाहर भी थी सर. I mean, there were so many cases of girls coming up to me and saying ki, they used to call me Indian Ninja, sir, because I used to keep my face hidden. I never used to show my face to them. And I used to only come when things went out of hand. So that became a psychological aspect for them. So whenever my Ghatak and myself used to actually be called, I used to actually see youngsters start cheering for us. So that aura, it became like that. I told the whole Ghatak, nobody to expose their faces. Okay. So that psychosis, that psychological fear was immense. कि ये लोग आ गए तो ये मारेंगे. And वो भी for good, not की पिटाई type. And एक ये incident हुआ, one more incident took place, sir. There I kind of broke the orders. But आप देखो, ऑफिसर होने का dilemma इतना है during war. Had things gone wrong, I would have been court-martialed also. I mean, Yeah, it yeah. could have happened. I will not deny it. Firing was about to begin in the morning, 7:15, 25th of December. Outside the main UN gate, you had Dinkas, Noors, elderly people, ladies, men, children, parents, small kids, all waiting there to move in. And I could actually see the rebel forces, just walking in for the attack towards us. So I knew that they are going to be massacred at the gate. So I went in and sir, वहाँ पे UNPOL करके है, United Nations Police. So UNPOL के local people are deployed there. वो जान पूछ के दरवाजा नहीं खोल रहे थे. So when I reached at the gate from Toor OP, once I left Toor OP and I came to the Alpha gate, I actually went into abusing them and telling them open the gate. They said, what if somebody with an AK-47 sneaks in and while you guys are fighting outside, they open up an attack here and they ambush our gate and then the rebels enter from this gate. अब सर बात तो लॉजिक की थी. There was nothing illogical in it. It was possibility हो सकती थी. But I realized कि जब रेबल्स ने आना ही है मारने के लिए तो कम से कम मतलब हम अपनी अंदर वाली साइड तो सिक्योर रखें. Why should I keep somebody exposed already outside? Why should I give up on somebody's life? It was very easy to give up by telling them अच्छा यार बाहर रहने दो. तो सर वही है कि then I took a call. I said I cocked my weapon and I pointed it out to them. I said you are no less than the rebels. They die in front of a gate.
And then sir, we opened up the gate. Around 200 to 250 people while coming in. The old ladies were literally holding my hand, and a few of them were like blessing me. वो आपने वो मूवी देखी है टीयर्स ऑफ द सन? Yeah, yeah, yeah. लास्ट में जो कैंप पे पहुंचते हैं तो वैसा सीन था सर. दे वर लिटरली इन टीयर्स, दे वर क्राइंग. एल्डरली पीपल हु वर 70 ईयर ओल्ड, 60 ईयर ओल्ड, उनकी ये हालत थी. एंड दैट shook me sir, that actually shook and touched my soul कि यार, what if I had not taken this step? These people would have been dead, finished. Generations of these kids wiped out. True. Right? And I mean, sir, just put yourself in their place. आप सोचें अगर हम इनकी जगह बाहर होते. Very We have true. power, we have no authority, we are just at the mercy of God and nothing else. We have no possession. We have our kids with us, and our ladies there, our parents are dependent on us. So you can mindset and what that situation would have been. And they knew okay, they are going to die, matter of hours. And so that once I got them in, then I locked the door and then I told the BMP guy that you're already facing the main gate. I said, cock your weapon. He said, sir, weapon cock कर लिया, फिर शाम को पूरा खोल के unload करना पड़ेगा. I said, I don't give a damn, just do it. तो सर वो BMP के लीवर को ना 21 बार कॉक करना पड़ता है तो जाके फुल्ली लोड होती है. तो उसने फिर प्रॉपर 21 बार लीवर को आगे पीछे कर करके मेरे सामने आई, केप्ट स्टैंडिंग. आई सेड लोड द बीएमपी, आई नीड अ राउंड इन द चेंबर. उन्हें करके मेरे किया. मैं कहा इन केस यहाँ पे कोई एम्बुश करता है हथियार के साथ, तो दे never had any luggage on them. I said use your PKT machine gun and your proper main weapon. They said साहब पर आपके आदेश. मैंने कहा तो मरता क्या नहीं करता. मैं कहा तुझे मारने आ रहे होंगे तो क्या करेगा, फोन सेट पे परमिशन नहीं लेगा. मैं कहा जस्ट टेक दैट आई हैव टोल्ड, बाद में देख जाएगी जो होगा. ही सेड ठीक है. सो सर यू नीड टू गिव अ सोल्जर अ फ्री हैंड in war to a certain limit. Yeah. Otherwise a soldier will always be hesitant कि मैं करूं क्या. वो अगर और मगर की कार्रवाई में फंसा रह जाता है साइकोलॉजिकली. And then they go numb when the bullet passes by their head. So sir, things were quite grueling. मतलब Nepal की army had vacated a post due to excessive fire. I manned their post, and then when I looked at them, they were in their Casper vehicle, MPV. Okay. And when I looked back at them and I shouted, मैं क्या गोरखे तो ऐसे नहीं होते थे, क्या हो गया? And I had just one more guy with me. Then उनके 2 troops disobeyed their JCO's orders and came to me. कहते साहब आपने हमें बोला ना कि गोरखों को क्या हो गया. कहते साहब बोलो करना क्या है. By that time sir 4-5 bullets already hit the 10 sheets हमारी जो पोस्ट की थी. Including me, we all ducked. Then we cocked our weapon and then we were ready. Once we got up, we started taking aimed fire sir, to disperse the enemy. So things were on the edge. Now UN was a life-changing incident sir. Psychologically it made a man out of me and saw a lot of death. Went to the cities, saw these beheaded heads kept on the tables of the reception. All the patients who were in the beds were beheaded, so could just see the bodies. Next to the airport near the Nile River, we saw hundreds of bodies massacred there near the river. People of all ages, no one was spared. And we never knew about this till our forces went on ground. Actually, after we dispersed the rebel forces from
in and around the camp. So people usually say, sir, action, combat, and मैंने तो मतलब weapon चलाना है. I mean, it's all too glorious for a person who's not seen combat or death. Very But true. for a person like you and me, sir, who've seen a lot of violence, death, and a lot of gore at a very young age, so that is what I want to tell the audience, that maturity doesn't come with age itself. Maturity also comes with the acts in life that you have experienced, the incidents that you have been a victim of or that you have seen in your life. They make you more mature. So, Absolutely. है ना So, sir? this reminds me, very often when I go in public, लोगों का एक बड़ा स्टैंडर्ड सवाल होता है कि फौज में ऐसा क्या है जो मोटिवेट करता है जवानों को या लोगों को, और किस चीज की वजह से इतना लोगों में जुनून रहता है. So I think each time I remember the Chetwood credo, the safety, honor and welfare of your men comes first always and every time. तो अभी Yes, जब आप ये बता रहे थे कि मैं जहां पे भी था वहां पे आपको ये एक यकीन था कि जो भी गोली लगेगी पहले मुझे लगेगी, या जो भी कुछ exactly. बुरा होगा वो पहले मुझे होगा, जिसकी वजह से मेरी पूरी टीम को कम से कम ये भरोसा तो रहे कि मैं किस आदमी के लिए लड़ रहा हूँ, किस आदमी से ऑर्डर ले रहा हूँ. Yes, sir. तो ब्रिलियंट. मतलब मैं तो पहली बार मैं अपने किसी लाइव में इतनी देर तक चुप बैठा हूँ. एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल who know me, who've attended my live, they would agree to that. But this is something I phenomenal, mean, yeah. Toor, hats off. I strongly feel, sir, that at least a movie should be made on this. I mean, we have had our officers and soldiers and warrant officers martyred. Akobo mein Hmm. we there was an attack on us. We lost two JCOs and one boy Mandal was shot in the chest, non-fatal. But I mean, sir, and Akobo camp के अंदर तो 46 Dinkas were shot point blank. उन्हें kneel down करवा के मारा गया था. And our boys were taken hostage. There was a hostage situation that was there. And we could have had a body count of around 30 soldiers there, 30 coffins. I don't think we could have accommodated that much. We couldn't have. There would have been no place for it. I mean, things were on the edge. And I mean, so when I saw these rebels charge at us, at the back of my head, I knew this is death coming to me. This is the jaw of death. But sir, there's a very thin line between a predator and a prey. Very true. A prey is a person who's going to be hunted. But if that prey's living instinct, the prey's will to live, is far more superior than that of the predator, that's Then he just becomes the predator and predator becomes the prey. yes. So it's a very thin line between the hunter and the hunted. So True. that is what I keep telling them, that bravery has a very important price to pay. That is martyrdom, or you become a living legend. Either of the two. Very true. But there is no third way about it. Either you live or you die, or you get martyred. And that is the level of risk. And this is not a calculative risk. I mean, this is a risk which is beyond measure. I mean, this is not a joke happening that I will get a retake of it. It's not a video game where we can say, अरे यार थोड़ी सी गलती होगी तो अगली बार देख लेंगे. नहीं. This is a zero error syndrome, sir. Yeah. You have to be at 6 sigma every time. मतलब it's not a Exactly. flight जिसमें आप बोर्ड कर रहे हो और कोई बोले कि 100 में से 90 बार सही जाती है, 10 बार क्रैश कर जाती है. Things don't happen that way in life, sir. Not at all. And till today, I always remember my father's words when I told him that, Dad, yaar, I want to see action in life. I mean, my course mates were baffled when they heard about my story, that how I came back alive and what all odds I went through there. They were in shock. They were like, I mean, uh,
I feel, sir, either, see, sir, the privileged and the cursed are the same people. The one who possesses more powers also has to be 10 times more careful in using them. That is his curse, that he cannot slip, he cannot become casual in dealing with it. True. Similarly, sir, for a combat warrior, it is it is a very thin red line between bravery and foolishness. And I have run in between fire where bullets were coming across towards me. Probably it was the hand of God. I mean, I have no clue, sir, how I ran, I sprinted, and I came to my post in the midst of that fire. And my troops, I mean, my Havaldar abused me. उसने बोला मुझे, कहता बहनचोद साहब आपको समझ नहीं आ रहा है क्या, कैसे समझाएं आपको. मैंने कहा गोलियां चल चुकी है, मैं अपनी पोस्ट से उधर हूं, मैं बंदों को अंदर कर रहा था, द पीपल हु आई वाज गेटिंग इनसाइड द कैंप. तो आई सेड या तो वो मरते 250 लोग या तो मैं अकेला मरता. तो मैंने कहा अकेला मरना मंजूर है, वो 250 लोगों का मरना मंजूर नहीं है. कहते साहब पर थोड़ा फायर को कम तो होने दो. मैंने कहा लड़ाई चल रही है, कौन बोल रहा है कि फायर कम होगा. कहते साहब अगली बार थोड़ा ध्यान से करो यार. कहता आपको कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी रहेगी, हम जिंदगी भर जवाब नहीं दे पाएंगे किसी को. कहते आप ऐसे मत करो, आप बस इधर ही रहो. तो मैंने कहा मैंने और भी तो एक दो पोस्टें देखनी है. कहते आप यहाँ से अब आप रेडियो पे देखो. कहते आप उधर जा रहे हो भागते हुए, कहते कोई बात होगी फिर. देन सर आई वी स्टार्टेड विद द कम्युनिकेटिंग पार्ट एंड पासिंग ऑफ ऑर्डर्स. तो एज अ रिजल्ट पोस्ट का नाम तूर ओपी ऐसे पड़ गया कि एक दो बार मैं रेडियो पे आता नहीं था, बिकॉज आई वांटेड रेडियो साइलेंस. आई नीडेड टू फोकस ऑन व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स अस. तो उस टाइम पे देन जब मैं एक दो बार आंसर नहीं देता था तो दे स्टार्टेड कि सो एंड सो, जैसे आप बोलोगे कैप्टन धर्मवीर फॉर लेफ्टिनेंट समर ओवर, तो मैं आता नहीं था. तो फिर अगर जवान जवाब देता था तो जवान नहीं बोला कि टूर ओपी टू कॉलिंग स्टेशन पास मैसेज ओवर. तो वो कहते हाँ टूर ओपी क्या चल रहा है. तो एज अ रिजल्ट सर माय सीईओ ऑफिशियली नेम्ड द पोस्ट टूर ओपी, टूर ऑब्जर्वेशन पोस्ट. And this was a post which would give a early warning at least 10 to 15 minutes prior to the attack which used to come, which helped us save hundreds of lives. So that is how, sir. Now there's another Paltan which has gone to South Sudan. So they have contacted me and they've taken a write-up regarding the Toor OP post and everything. Oh, wow. So that is a proper established post on foreign land called Toor OP, and which is actually helping all the Paltans to have a good vantage point of the whole city and everything which is going on around them. Awesome. लेगेसी छोड़ के आए हैं आप अपनी. उस टाइम तो पता नहीं था सर. आई वॉज इन अयोध्या आफ्टर यू एंड वी केम टू अयोध्या. तो जो पल्टन वहां गई, वहां से कॉल आया इंडिया कि please give details on and write up of the officer who was martyred on this post. So my present CEO asked कि what nonsense. कहता कोई नहीं मार्टर हुआ हमारे में से. कहते हाँ इंजरीज वगैरह हुई थी, गोलियां लगी थी, बट नो फेटालिटीज. कहते नहीं सर देयर इज अ पोस्ट कॉल्ड टूर ओपी, तो मार्टर हुए हमें थे. लगा कि कुछ हुआ होगा वहां पे इसलिए टूर ओपी नाम रखा है. कहते दैट ब्लडी बगर इज इन द जंगल्स विद हिज घातक बड़ी डूइंग नेविगेशन प्रैक्टिस. तो कहते सर प्लीज बात करवा दो बिकॉज वी हैव अ इंटेलिजेंस ऑफ एन अटैक कमिंग ऑन टू अस, सो ही नोज द एरिया इनसाइड आउट, सो वी नीड टू टॉक टू हिम. तो आई वाज गिवन अ स्पेशल मैसेज ऑन द रेडियो सेट. एंड आपको तो पता है इन्फेंट्री में कैसे होता है ना, तूर फका वेयर आर यू. मैं सर क्या हो गया. कहता वेयर द हेल आर यू. मैं सर वी आर डूइंग नेविगेशन एक्सरसाइज. कहता बगर यू कम बैक टू द पल्टन, अभी जिप्सी पकड़ो पहुंचो and signal में बैठो, you will get a call and I got a shock of my life. You are no more. मैं कहा no more क्या हो गया. कहते नहीं यार किसी ने बताया बड़ी that you've been martyred abroad. मैं कहा no sir, क्या बात कर रहे हो. तो then once I came back to the unit, then my CEO narrated me कि साले मैं तो फोन पे ये सुना.
मैं कहा सर पता नहीं. So he was quite happy with the achievement and all. So I got a commendation there, sir. I got a commendation for that. Wow. फिर एक और there was Operation Jajjar Kotli in Udhampur that happened in 2018 on Friday the 13th, ओ 2000. बाबा रे. तो डेट भी डेडली थी. So that time 4 SF and my Ghatak was there. My Paltan's Ghatak was there, 8 Rajaf ki. And then we neutralized 3 Jaish-e-Mohammed ke terrorists in a brutal manner. We had to, else we would have been in their place. So वही है सर, the killing instinct and will to survive. अगर लोगों को बड़ी गलत फहमियां होती हैं कि अरे टेररिस्ट तो फिदाइन हुआ है, ये है वो है, दे आर नॉट अवेयर उनसे ज्यादा जबरदस्त फिदाइन फॉर डेमोक्रेसी तो हम हैं. We are ready to lay down our life for democracy. We are Very ready. true. We are ready to protect the human rights of a civilized democracy by putting our lives on the line. I mean, I am ready even today to widow my wife and orphan my children if the needs be, if call of the hour and need of the hour demands me to do that, I will happily move in and do what I'm told to do for the country. So, I mean, sir, I'm sure we all are programmed that way. True. That, every time one cannot have a balance sheet ki ye hai to ye hoga, ye hai to ye hoga. Nahin. There are things at times in life जो unconditionally sacrifices देने हैं. And this is one part that, we giving ourselves up for a motherland. I think that would be the most proud and moment and filled with pride. That is how warriors go, sir, with no Very true. regret. Very true. Uh, that is the thing, sir. Baki, sir, few things that I also want to bring out are अभी I think we'll have to do a part 2 of these stories because they're so interesting and अभी जज्जर कोटली का कर लेंगे सर, but I just हाँ. want to one message which is very Yeah, important, that please choose your mentors wisely. We all are humans and to err is human. Yeah. गलतियां हमसे भी होती हैं. Second aspect, the person in question जिसकी वजह से the controversy has arisen. Firstly, let us keep in mind that no military person discusses politics, religion and women. तो ये 3 चीजें हैं जिससे फौजी दूर रहता है. So that is the first Sigma rule, I would say, that we follow. In case somebody is faltered, let us grant, मतलब एक खून तो भगवान भी माफ कर देता है. What I would say is that probably to err is human, and looking at the gentleman's age, I think we should let go of the statement that was made by him. I mean, that is how we can show maturity from ourselves, as True. from from the caste that we belong to, and the family backgrounds that we belong to, and the pressures of life that we are having. We cannot afford to waste time on such topics. But Very yes, true. one message needs to be given, that please, I mean, I've been taught in Forge that if you take shit, people will give you shit. Very true. So basically, the message should be put in a very refined and a dignified manner, that no nonsense will be tolerated, and being senior in age, आपको कुछ हद तक लीवरेज है to admonish, to scold or to show down some youth. वो जैसे कहते हैं नेगेटिव इनकरेजमेंट, कि इसे इसकी बेइज्जती करा दो तो थोड़ा सा मतलब इसका जमीर जाग जाएगा कि भाई क्या है टाइप, है ना सर. Very true.
So that is the thing, and I think our caste is quite magnanimous and a royalty caste, and I do not think we have to stoop that low to that extent. And I really do not know, sir. मतलब कई बोल रहे थे कि publicity stunt है, कुछ commercial part है, and all I can tell the aspirants is कि तुमने see whatever whoever as a mentor you choose, firstly you choose your mentor unconditionally. There can be no condition Very true. when you choose a mentor. अगर आपने select कर लिया है कि मैंने see why do decisions have importance in life? If you take a wrong decision and stick by it, you are morally upright. ठीक है? Yeah. And ethically you will be correct by accepting it, whether it is right or wrong. But at the time of giving a statement, now they say maturity comes with age, experience comes with age. I do not feel that is the thing, because the kind of violence, the kind of death, gore, and bloodshed that I have experienced in life, and probably after the ones who've seen war or who've seen battles can only vouch for what I'm saying. They say only the dead have seen the end of war. So probably I've not seen the end of war till the day I'm alive. But the time that I was there and that I witnessed, and the rebels that we terminated and all, it's survival of the fittest है. अगर वो नहीं हो तो तुम हो, अगर तुम हो तो वो नहीं हो. It's a game of chess that we are expendable and we are replaceable. So that is how life is. After me, some other major Toor will rise up in his career, and and कैप्टन डीवी सर की जगह कोई और उधर कैप्टन डीवी सर की जगह बैठा होएगा आफ्टर फ्यू years of time. So everything has a place, time, and phase and era in life. So don't get judgmental. गलती हुई है, I agree. People should be responsible enough to even give a comment in a casual manner, because in today's world of technology and time and access to media, now I'm sure could be that General Shah would have been giving this statement in a very casual manner. जैसे कि I am in a closed group of friends और मैंने statements ऐसी एक दो पास कर दी. But that is what I'm saying, that you have to be careful that it is on record. It has been recorded on camera. तो आप in denial भी नहीं हो सकते हो. But yes, intent different ki your intent could have been another dimension, totally altogether. Your perception onto those statements could have been different. But what I'm saying is, what the public sees is what it believes. तो जो पब्लिक ने और सुना, जो मैंने भी देखा and सुना, it is ethically and morally incorrect. It was unorthodox, but I still say कि एक खून भगवान भी माफ कर देता है. So this is a slip of tongue. I know slip of tongue you cannot recover, but मैं वही बोल रहा हूँ, maturity comes in the way you react to something which is grossly wrong. If you also end up rebutting in the same manner, it is like making yourself also blind. True. So mature person क्या करता है सर? आप you look beyond that person. अब जितने भी अब many students were saying sir क्या करें, I did a mistake and all. I said it's your call, but please choose a mentor wisely, because mentor unconditionally होते हैं सर. मतलब कैप्टन डीवी is कैप्टन डीवीएस, मतलब he will say कि ऐसा है. If you like his statement, stick to it. But when somebody is faltering, you are duty bound also to tell or guide. Yeah. कि सर ये ना थोड़ा गलत लगा है, आप इसे हटा दो या रहने दो, ऐसे नहीं है सही. बट देयर इज अ वे ऑफ पुटिंग इट अक्रॉस. तो वही मैं कह रहा हूँ सर कि योर disagreement, and your anger cannot be expressed in terms of abuses, foul language.
we must take care that he's a senior citizen also. Yeah, He's yeah, a system and society. And ऐसे बहुत हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं. All the five fingers are different in length. So that's what I'm saying. Every veteran whom you come across is different in terms of their personal personalities and their point of views. तो सर गलत तो हुआ है. I would agree to it. But I would also say that being from the caste that we all are, as Rajputs, we should let go. But it has been conveyed in the appropriate manner कि जो हुआ है गलत हुआ है, ठीक नहीं हुआ है. सेकेंडली, मैं एस्पिरेंट्स को एक चीज और बोलना चाहता हूँ. आप खुद जाते हो, आप खुद इनकरेज करते हो, आप खुद बिजनेस भी प्रमोट करवाते हो, एंड देन समबडी सेंडिंग मी अ मैसेज that his younger son is doing MBA from California, elder son is doing this. I said, I have nothing to do with it. I said, it is just you all who have everything to do with it. क्योंकि तुम्हारे पैसे भी सब कुछ हो रहा है. तो do not crib. अब आप crib नहीं कर सकते हो. But yes, to rectify things, I would say you are a wiser community of youth to select whom you should follow. जैसे विजय नायर सर हो गए, डीवीएस सर हो गए, ठीक है. मेरा तो आई डोंट कम वेरी मच ऑफन ऑन मतलब इंस्टाग्राम और एनीथिंग सर, मैं कम ही आता हूँ. So I'm telling the youth, it is entirely their call, but please choose wisely. I mean, my father is 65 years old. He is from the times where people are orthodox with the mindset. आप उनको कुछ लॉजिकल आंसर भी दोगे, दे विल नॉट अग्री टू इट. yeah. तो ये पुराने टाइप के जनरल्स और कर्नल्स हैं हु सेड कि पानी के ऊपर चलेगा. तो जवान सावधान में खड़े होकर बोला, हाँ साहब हम पानी के ऊपर चलेगा, चल सकता है, आपने बोला है तो होगा. बट इन टूडेज टाइम द ऑफिसर विल से, यार use an UAV or a hepter to go across to from this water body, let's reach at the earliest, save time, maintain surprise, and hit the enemy hard, give him no reaction, get your objective. So things are different now. अब तो सर ड्रोन एज आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज आ गई है. So I think our toleration level has to also expand in terms of the generation of people with whom we are dealing with. Very true. है ना सर. बट वॉट एवर वॉज डन वॉज रिग्रेटेबल. Yeah. नहीं होना चाहिए था, अनजाने में हो गया. और वॉट जनरल साहब क्लेम्स दैट देयर वाज मैल इंटेंट अमंग सम पीपल हु डिड इट. बट आई वुड ओनली टेल वन थिंग, that whenever I am talking to anybody whom I am not very well aware of or very well acquainted with, please keep yourself very diplomatically upright. Please speak to the point. Avoid any controversial topics. And three things which Fauj have taught you. Please do not discuss women, religion, and politics as much as possible. Please avoid these, and probably you are going to lead a very refined and a very upfront life, peaceful life. And I request all the followers who are watching this to follow DVS sir. And agar time mile, and if you have the time, then you can think of following me. Otherwise, I'm as good as redundant. मेरा इतना कुछ नहीं है. Not But at all. Not at all. in terms of Uh, lessons of life, sir, in terms of lessons of life, how to tackle stress, depression, how to fight it out. If you are directionless, what you need to do in life to be more focused and scheduled. So उसके ऊपर workshop and classes I can conduct lectures on that in collaboration with you, sir. Definitely. I mean, sir, let's join hands to a positive direction to the youth. Absolutely. So taking clue from what you just mentioned, Samar,
there are two things that I want to add to it. तोड़ना बहुत आसान होता है, जोड़ना बहुत मुश्किल होता है. एक स्टेटमेंट, एक दो क्लिप मार्केट में चल रही है और इसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि कितने सारे कास्ट और रिलीजन आपस में एक दूसरे को लोग गाली दे रहे हैं. So we have forgotten the origin कि कहाँ से चीजें शुरू हुई. But see how easily we got divided. You know that we were stronger or no, you were not stronger and stuff like that. So as you said, फौज में इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है. Yes. दूसरी चीज, as you said, choose your mentors wisely. मैं एक चीज और क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि मैं हुआ या कोई भी एक नॉर्मल ऑफिसर हुआ, वो आपको सिर्फ जिंदगी में उसने जो काम किए हैं उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है. बहुत सारे लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन है कि फोर्स डीवीएस पे मैं कुछ ज्ञान बांट के एंड आई एम ट्राइंग टू कमर्शियलाइज इट. थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई वांट टू क्लैरिफाई दैट आई हैव 3 SSB qualified DIPR approved assessors. They will teach you for your SSB things. I am only a platform, and when I say I am a platform, this platform is supposed to give back. 3 officer with a challenge that the price tag that we came up with, if there is any other platform in the country where 3 officer assessors are available, the course is free. You take the course free. So I am not the guru. Now coming back to one thing that Major Samar has just offered. To my surprise, 2 दिन पहले मैंने एक पोल किया था समर कि फोर्स पे आपको और क्या क्या चाहिए. तो मैंने वहां पे 3 चीजें डाली थी. एक था कम्युनिकेशन कोर्स, एक था रिटन की तैयारी और तीसरी चीज मैंने डाली थी मेंटल हेल्थ. एंड टू माय सरप्राइज, यू वुड नॉट बिलीव, the responses are to the tune of 1200 for written, 1280 for communication, Okay. and 900 responses for mental health are there. Okay. So I wholeheartedly welcome you. Sir, And I want to tell people that, you know, we are here not to make money. With God's grace, Samar is a 4th generation officer, and we are, आप लोगों की दया और प्यार से सब कुछ अच्छा चल रहा है. And if someone like Samar can come, share his thoughts, share his views as to how to deal with, you know, because he has seen depression, he has seen so much happening around him that he can contribute to how to deal with such situations, right? So that's the aim. Sir, I just like to clarify, sir. I have not. Uh, I have witnessed depression in my troops. I have seen depression in the refugees. And when the depressive people are there in hundreds and thousands, and in that you have to cope up and keep your mental stability that नहीं, I have to remain focused. अगर मैं डगमगा गया तो बाकियों को कौन संभालेगा. बिल्कुल सही बात है. तो और शायद वो रोल हम लोग अपनी फैमिली में प्ले कर रहे हैं. Exactly, sir. हर कोई. So that is what I'm saying, that when young boys, due to unfortunate incidents, lose their parents at a young age, be it father or mother, you know, and they see the sufferings in an early age, makes them more tough in life. I mean, that see, you got to, sir, जिंदगी के 2 पहलू होते हैं. एक होता है कि, you know, what do you call yourself tough? By tackling such situations, tough situations. How? By putting a cover on your face. That's what men do. You laugh when you're sad inside. True. You cry when you're alone, when nobody sees you. So, and when you're depressed, you don't talk to anybody because you don't want to share it. The Indian society is such, if you discuss depression or anything like this, they say, यार बंदा mentally weak है. Very true. But मेरा कहने का मतलब ये है, जो बंदा depressed है, he's seen more shit than the guy who's actually mentally happy. Very true. So the guy who's in a depressive state is also mentally tough, because वो depression में होते हुए भी he's living it, he's tackling it. It is just that how you have to show him the way to move out of it. जैसे यूथ के बड़े क्वेश्चन आते हैं सर कि सर मैं फेल हो गया, आई एम नॉट अ गो गेटर. मैंने कहा तरतीब तो बनाओ. डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? डू यू मेक योर ओन बेड?
कहते सर इतनी इतनी चीजों के लिए टाइम नहीं है बेड वेड बनाने के लिए। मैं कहा यार फिर तो तुम टाटा बिरला के लेवल के हो गए दैट यू डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस। मैं कि यू मस्ट एब्सोल्युटली। बी वर्किंग फॉर यू देन, है ना, तुम्हारा बेड भी बनाएंगे, तुम्हारा खाना भी पेश हो जाएगा। मैं कि ये उन लोगों के लिए होता है who have deserved and earned these facilities in life. You have to earn it. मैं कहा आपने खुद क्या अचीव किया है दैट यू वांट ऑल द कंफर्ट इन लाइफ। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, खेल क्या उसने खेला जिसने कुछ ना झेला। तो पहले आप टफ टाइम्स को तो टैकल करो, राइट। तब tomorrow when you marry you have a responsibility of a lady to take care of a house to run, then you will have kids, then how to mentor the kids, how to make them have a hobby into sports, numismatics, or racing, cycling, biking, है ना सर। तो अलग अलग आपको कैसे हॉबीज वगैरह करवाओगे, जब तक आपको खुद नहीं पता है तो आप आगे किसको मतलब अपग्रेड करोगे। So till the time I do not know anything, I have no moral right to say somebody that I am better than you. आर्मी में वेरी ऐसे ही ट्रू। होता है, पहले हम खुद करते हैं। If I am capable enough, I have earned the right to check and tell the other person that you bloody well do it. और अगर वो बोलेगा भाई मैं क्यों करूं, तो you can then say क्योंकि मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, and you will do it. So that is the thing, that you have to become capable yourselves, only then you can move out and start telling people do this. अगर खुद की कैपेबिलिटी नहीं है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, वेरी ट्रू। है ना सर। चलिए, आई थिंक this is one of the most engaging sessions that I have had in last 2 to 3 years, because barring the last 10-15 minutes, the count of people who were listening to us concurrently was in the range of almost 300 to 500. सर So सर only at the end of it, I will realize that how many people have visited during the session. सर But हमें definitely ज़रूरत है आपके साथ एक बार और बात करने की, आपके पहलुओं को जानने के लिए। और उसके बाद शायद we will connect offline, समर, for the mental health bit, एक बार हमारे पास जब और थोड़े लोग आ जाते हैं। So सर I guess that would be a very impactful thing that you can contribute with. And I will request one of the days when your schedule allows you, we सर will conduct a session for you, through you, right? हाँ सर, बट बेसिकली सर वी नीड टू गिव देम अ डायरेक्शन, स्पेशली टू Yeah, दोज who feel that they are not able to recognize their purpose of existence। कहते सर मैंने तो एक ही चीज सोची थी, फौज में जाऊंगा, बट आई सेड थिंग्स डोंट हैपन लाइक दैट इन लाइफ। आई हैड टू ऑप्शंस, आई हैड अ प्लान बी आल्सो। So that is how life works in life, yeah, कि yeah, आपका प्लान बी भी होना है। And in army, when we go for operations, it is plan B, because we know yeah, yeah, yeah. going to go for a six no matter what. Perfection can never be there in one's destiny. Otherwise, uh, ये हाथ की लकीरें सब सीधी और अच्छी अच्छी होती। It wouldn't have been haphazard and lot of sketching. So God wouldn't have done so much of sketching onto our hands. तो सर तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी, एंड कष्ट लेना पड़ेगा। बिकॉज सर यू सी सर आजकल आई वेंट फॉर अ बाइक रैली इन राजस्थान, देयर वाज अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो वन ऑफ द एल्डर गॉट अप एंड सेड इंडियन आर्मी बड़ी ज्यादती कर रही है, हमारे कौम के लड़कों को नहीं ले रही। नाउ वी आर अ सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन, आई फेल्ट ऑफेंडेड। आई सेड अच्छा काका एक चीज बताओ, आपका परिवार तरक्की कर रहा है? कह रहे बिल्कुल कर रहा है जी, कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं कहा Hmm, फिर तो बेटे को आपने मोटरसाइकिल कब लेके दी? कहता है 8वीं में ले दी थी। hmm. मैं कहा वेरी गुड। मैं कहा और मोबाइल? कहता मोबाइल हमने लड़के को 10वीं में ले दिया था। तो मैंने कहा तो आउटपुट क्या है उसकी? दौड़ने की क्षमता आपने 8वीं क्लास से कमजोर कर दी मोटरसाइकिल देके, पढ़ाई की क्षमता आपने 10वीं से खत्म कर दी उसकी मोबाइल देके, and then you expect your child to perform well in physicals and in studies, but whereas you have given the most distractive elements to your child, which is going to deprive him of that achievement। तो मैं वही बोल रहा हूँ सर कि
it is parents' responsibility to take care. Very true. Yeah. बाकी अगला सेशन करेंगे सर. ऑपरेशन झज्जर कोटली इज देयर. So बिल्कुल. I'll let That will be the you know name of the next session. झज्जर कोटली. बिल्कुल. ठीक है सर. ठीक And I है. tell them the psych of a combatant. What is in the बिल्कुल. You are the combat man. That's the title that we are going to give you now. done, sir, done. ठीक है. Thank you so much, Samar, for taking out time. It's an honor And we will. and a privilege to be on this platform, sir. And I need only one help from your side, sir. इसके ऊपर कोई movie बनवा दो so that people are aware of the sacrifices of our forces on foreign land. बिल्कुल. And this was a proper war we witnessed. At least I'm why sure. emphasizing it is officers and JCOs and soldiers have been martyred in this mission. It needs to be showcased to the Indian public. Very true. It needs to be. It's not a. I mean, my life changed after that war. It's not what it used to be before. We will take it to the right people. Roger, sir. And I'll connect with you. We'll do something about it. Right, sir. Right. ठीक है. Right, sir. अगले सेशन तक इंतजार करिए आप लोग. I am sure we have a lot for you guys. And once again, thank you so much, Samar. I think it's one of the best talks that I've had on my handle. Thank you so much. Jai Hind, sir. Jai Hind, buddy. You take care. Sir, Jai Hind, sir.